Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to explore one of the most important topics of biology or biotechnology, which is cell culture techniques. So from producing vaccines and antibodies to studying cancer, stem cells and genetics, cell culture is the backbone of biological research applications and innovations as well. Okay, so today we are going to study this topic in detail, but before proceeding towards the video, I just want to request to you all to please like, comment, share and subscribe to my channel. So thank you so much. Let's get started. Okay, so first and foremost, we are going to study about introduction of cell culture, like what is cell culture and how do we define it in the layman terms. See, in simple terms, I would say that cell culture is the process where you can grow the cells under controlled conditions. So when I say controlled condition, it means that you are providing the growth medium, you are providing the nutrients to the bacteria population, to the to whatever you are growing in the culture, that is bacteria, राइट सो आप नेचुरल एनवायरनमेंट में उन मतलब आउटसाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर बैक्टीरिया जनरली ग्रो करते हैं, आप उसे एक लैब के अंदर ग्रो कर रहे हैं एंड यू आर प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर ग्रोथ मीडियम एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग टू दैट बैक्टीरिया, टू दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे वो ग्रो कर पाए. सो इस प्रोसेस को ही हम सेल कल्चर बोलते हैं. So instead of living inside an organisms, these cells are nurtured in the lab environment, as I just told you. इसको हम रिसर्च पर्पस के लिए भी करते हैं, मेडिकल पर्पसेस के लिए भी किया जाता है. सो एप्लीकेशंस आर वास्ट. Cell culture, what does it allow us? What does it, so cell culture enables this the study of behavior of cells. Cells किस तरीके से behave करते हैं under certain conditions और under various conditions, how cells behave differently. न्यू ड्रग्स को टेस्ट करने के काम आता है, जैसे हम इन सेल्स पे टेस्ट कर सकते हैं न्यू ड्रग्स के बिहेवियर को, इम्पैक्ट को, तो वो चीज़ समझ में आती है. एंड ऑल्सो वी कैन प्रोड्यूस लाइफ सेविंग बायोफार्मास्यूटिकल्स विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रग्स. ओके, सो दीज definitely have vast amount of importance. Now, what is the history and significance of these cells? So the concept of cell culture dates back to 1907. जहाँ पर रॉस हैरिसन ने नर्व सेल्स को कल्चर किया था फ्रॉम अ फ्रॉग से उन्होंने नर्व सेल्स को कल्चर किया था. एंड देन लेटर इन द 1950s, फेमस हीला सेल्स विच वी ऑल नो अबाउट, वो जो फर्स्ट इमोर्टल ह्यूमन सेल लाइन थी उसको कल्चर किया गया, जहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया सेल कल्चर मेथड. एंड इसके एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हो गए बिकॉज ह्यूमंस पे वो पॉसिबिलिटी हुई थी. So since then cell culture has become central to everything from vaccine production to cancer and genetic studies as well. And when I'm saying cell culture has vast applications, it's no exaggeration to say all of that. It's said that cell culture techniques have changed the world of medicine and biotechnology world. Okay, so now what are the types of cell culture? See, there are three main types to cell culture. First is primary cell culture, second is secondary cell culture and third is continuous cell lines. Okay, नाउ हम इसको एक एक करके समझेंगे. फर्स्ट मैंने बोला प्राइमरी सेल कल्चर. तो प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है? सी, जब हम टिश्यूज से सेल्स को डायरेक्टली आइसोलेट कर लेते हैं, जो सेल का टिश्यूज होते हैं, जो बॉडी के जो अंदर टिश्यूज होते हैं, वहां से अगर हम डायरेक्टली सेल्स को निकालते हैं, उस टाइप को आप प्राइमरी सेल कल्चर बोलते हो, बिकॉज वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं ओरिजिनल टिश्यूज से, बिकॉज हमने टिश्यूज से सेल लिए हैं एंड दैट कैन ओनली डिवाइड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशंस. बहुत ज़्यादा जनरेशंस तक वो डिवाइड नहीं करते हैं, बट लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशंस पे डिवाइड कर पाते हैं. दैट इज प्राइमरी सेल कल्चर. सेकेंडरी सेल कल्चर ऑन द अदर हैंड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सब कल्चरिंग प्राइमरी सेल्स. सेकेंडरी सेल कल्चर क्या होता है? सो प्राइमरी सेल कल्चर्स को सब कल्चर करके, प्राइमरी सेल कल्चर्स को हम और कल्चर करते हैं. सो जब उससे जो सेल्स निकलते हैं, दे आर सेकेंडरी सेल कल्चर, और उनका रिसेम्बलेंस टू द ओरिजिनल टिश्यू थोड़ा सा कम होता है. थर्डली there are continuous cell lines. So continuous cell lines क्या होते हैं? When immortalized cells, जो कि
डिवाइड अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर सकते हैं, विच हैज द केपेबिलिटी टू डिवाइड अनकंट्रोलेबली, जैसे कि हीला सेल्स जो ह्यूमन सेल इमोर्टल सेल लाइन थी वो, तो उन टाइप ऑफ सेल्स को हम कंटिन्यूस सेल लाइन्स बोलते हैं। हर टाइप ऑफ सेल का अपना यूनिक यूज है, यूनिक इंपॉर्टेंस है बेसिक रिसर्च से इंडस्ट्रियल स्केल एप्लीकेशंस तक। Now, what are the essential requirements for cell culture? So, see, to keep cells alive and healthy, we must carefully control their environment. So, what are the important requirements? So, first is temperature. Temperature optimum होना चाहिए cells growth के लिए। जिस temperature पे cell mostly ग्रो करते हैं वो सबके लिए, हर टाइप ऑफ सेल के लिए अलग अलग होगा। सो वो मैमेलियन सेल्स 37 डिग्री इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से हर फॉर बैक्टीरियाज इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरी स्पीशीज ऑफ लाइक फॉर एवरी टाइप ऑफ बैक्टीरिया आई वुड से। आप कौन से एनवायरनमेंट से आप हेलो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर यू ग्रोइंग, सो उस पर डिपेंड करेगा लाइक व्हाट टेम्परेचर यू हैव टू प्रोवाइड। Then comes pH and humidity. So it's must stay constant to the it should be complement to the cells. It is going to different for every type of cells as I just said. Nutrient rich culture, तो सेल्स को फीड करने के लिए न्यूट्रिएंट रिच कल्चर ग्रोथ मीडियम जिसे हम बोलते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। सो दैट शुड बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू दी सेल कल्चर। प्रॉपर गैस एक्सचेंज, प्रॉपरली गैस एक्सचेंज होती रहनी चाहिए। 5% CO2 एटमॉस्फेयर का 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ऐसे इस तरीके से वो प्रॉपर गैस एक्सचेंज होना चाहिए। इंक्यूबेशन कंडीशंस प्रॉपर होने चाहिए, इंक्यूबेशन कंडीशंस में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। So, and above all, sterility is very critical. You know, even a single bacterial or fungal contaminant can ruin all cell culture, like entire culture. So that is very important. Now, the laboratory setup for the cell culture. So see, प्रोफेशनल सेल कल्चर लैब में कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं एक स्टेराइल और कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट इज लेमिनार एयर फ्लो हुड। लेमिनार एयर फ्लो हुड स्टेराइल वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हैंडल कर सकते हो। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो पर्सनल है जो रिसर्च कर रहा है उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Then comes CO2 incubator. CO2 incubator temperature maintain करता है, humidity maintain करता है, gas balance को maintain करता है into the lab. माइक्रोस्कोप्स बहुत ज़रूरी है सेल ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, मॉर्फोलॉजी समझने के लिए, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझने के लिए एट एनी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द कल्चर, वो उसके लिए माइक्रोस्कोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए, इफ यू आर यूजिंग अ पेट्री डिश, इफ यू आर यूजिंग अ टेस्ट ट्यूब, इफ यू आर यूजिंग एनीथिंग, एनी लैब इक्विपमेंट which needs to be sterilized, then autoclaves comes in handy. Like not comes in handy, but like autoclave is used. Then centrifuge and freezers. So centrifuge and freezers cell processing या storage के लिए काम आता है। centrifuge cell process करने के लिए काम आता है and freezer cell storage के लिए काम आते हैं। So all of these tools work together to ensure healthy contaminant-free cultures. Okay. Now, culture media. See, culture media acts as a food for cells, right? उनको उनका ग्रोथ मीडियम से ही उनकी न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। So, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनके अंदर वाइटामिन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं और भी बाकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब कुछ होते हैं। सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ मीडिया DMEM है। Then there is RPMI 1640. Then there is MEM. Then there is F12. So सीरम्स जो होते हैं, देयर आर सीरम्स लाइक FBS फीटल बोवाइन सीरम। सो ये ग्रोथ सप्लीमेंट की तरह ऐड किया जाता है टू द कल्चर। तो अदर देन द न्यूट्रिएंट मीडिया वी ऐड द ग्रोथ सप्लीमेंट्स एज वेल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। एंड एंटीबायोटिक्स ऐड की जाती है ताकि कंटेमिनेशन ना हो, तो एंटीबायोटिक्स भी ऐड की जाती है। चूजिंग द राइट मीडियम इज वेरी क्रूशियल बिकॉज डिफरेंट सेल टाइप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। सो आपको उस हिसाब से उनका न्यूट्रिएंट मीडियम उसको देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेल विच यू आर कल्चरिंग you have to choose a like particular kind of media, you have to choose a particular kind of growth serum. So yeah, then
comes next part, aseptic techniques. Now aseptic techniques क्या होता है? See, sterility is very important component of cell culture. When you're culturing a cell, you have to maintain sterility at any cost. Like that is the most important part of it. So to maintain sterility, there are some steps which you need to follow, which you must ensure that you are doing it. Okay. So first is you work inside a laminar airflow hood. As I said, it protects the personnel, it protects the sample or the microorganisms as well. So that is very important that you work in laminar flow hood when you are working on the cultures. When you're working on the cultures, you should wear gloves, masks, and lab coats as well, because that is also very important. Then disinfecting surfaces and equipment. So all the surfaces and equipment needs to be disinfected properly and at regular time intervals, and it's good to avoid unnecessary talking or moving rapidly during work, because the cell cultures are very sensitive to the movement and talking and all of that, because anything can contaminate the cell culture. And if any if a single point of cell culture is contaminated, if a single bacteria is contaminated, then the cell culture is going to be ruined for the entire culture. So it is good to ensure all of these steps to maintain sterility in the lab. Now, primary versus continuous cell lines. What are primary versus continuous cell lines? So see, let's talk about cell lines and let's understand them in a clear manner. So प्राइमरी सेल्स जो होते हैं, प्राइमरी सेल्स एज आई टोल्ड यू टिश्यूज से आइसोलेट किए जाते हैं और वो नेचुरल स्टेट टिश्यूज का या सेल्स का नेचुरल स्टेट मिमिक करने का काम करते हैं बॉडी के अंदर, एंड दे कैन ओनली डिवाइड अ लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशन, सो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. वेयर एज कंटिन्यूस सेल लाइन्स के बारे में अगर हम समझे तो दे आर इमॉर्टलाइज्ड. वो इमॉर्टलाइज्ड होते हैं, वो इनडेफिनेटली अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था हीला सेल. So it was derived from a cervical cancer cells in 1951, and it's still in use across the globe. Groundbreaking research. So cancerous cells से because they have the capability to uncontrollably divide, तो research purpose के लिए अभी भी use किए जाते हैं HeLa cells. So that is the main difference between primary cell line and continuous cell line. Depending on what is the requirement of like why we are using a certain kind of cell line, depending on that factor we choose the what kind of cell line we want to work with. अगर आपको कुछ छोटे स्टडी या नॉर्मल आपको कुछ रिजल्ट चाहिए, या इफ यू वांट टू स्टडी द बैक्टीरिया culture for that, so you can choose primary cells. If you want to study quickly, you can choose primary cells. If you want to study something big, or if you want to study the human cell line, you have to choose continuous cell line. So depending on what is your requirement, you can choose the cell line. Now, cell culture process. What is the process of? So it involves 5 key steps mainly. फर्स्ट इज सबसे पहले आप टिश्यू को आइसोलेट करोगे या सेल्स को आइसोलेट करोगे ऑर्गेनिज्म में से. वंस दैट इज डन, डिसएग्रीगेशन. डिसएग्रीगेशन मतलब क्या होता है, एंजाइम्स को यूज करके, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम है या फिर कोई भी एंजाइम को यूज जो मतलब आपको सेग्रीगेट करने में, डिसएग्रीगेट करने में काम आए, उस एंजाइम को यूज करके यू सेपरेट द सेल्स. सो जैसे ट्रिप्सिन जो है वो सेल्स को सेपरेट करती है. उसके बाद आप सेल्स की सीडिंग करते हो. सीडिंग यानी कि यू सीड दी सेल्स इनटू फ्लास्क और डिशेस जिसमें न्यूट्रिएंट मीडिया है, आप वहां से उठा के उसको वहां डालोगे, तो दैट इज सीडिंग. सीड करोगे आप कल्चर्स को, जहाँ न्यूट्रिएंट मीडिया है वहां पर आप सेल्स को डालोगे. वंस दैट इज ऑल्सो डन, देन कम्स दी पार्ट इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन जो है वो एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स पे होता है, तो दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल विच यू आर यूजिंग. हर पर्टिकुलर सेल लाइन का डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर CO2 रिक्वायरमेंट होता है. सो डिपेंडिंग ऑन वट एवर काइंड ऑफ सेल यू आर यूजिंग, उसका एक पर्टिकुलर CO2 रिक्वायरमेंट एंड टेम्परेचर होगा. सो यू हैव टू सेट दैट इन द इंक्यूबेटर एंड यू विल इंक्यूबेट द सेल कल्चर फॉर द ग्रोथ. उसके बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना होता है, ग्रोथ को, मॉर्फोलॉजी को, अंडर द माइक्रोस्कोप. सो एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स यू कैन टेक आउट द सैंपल एंड यू कैन ऑब्जर्व इट इनटू द microscope to understand if the growth is normal or if the growth is
going according to what you have planned. So that is how cell culture processes works. Okay, now subculturing and passaging. So see, as cells grow, जैसे कि cells grow होने लग जाते हैं, वो grow होते होते you will fill the container to for the cells to grow, right? जब सेल्स ग्रो होने लग जाते हैं तो वो उस कंटेनर को फिल करते रहते हैं, बिकॉज वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते जाते हैं, तो वो जो कंटेनर जिसमें आपने सेल्स को रखा है न्यूट्रिएंट मीडिया में, वो कंटेनर एक टाइम पे आके फिल हो जाता है. And that particular container, like the bacteria in that container, run out of nutrients, क्योंकि वो सारे, because growth of the microorganism is so rapid and वो जो nutrients आपने provide किया था वो खत्म हो जाते हैं. Then हम सब कल्चर करते हैं या passaging करते हैं. Now what is subculturing or passaging? See, subculturing को passaging क्यों किया जाता है? Because वो nutrients खत्म हो गए, but we want to grow the cells more. तो हम उसको सब कल्चर करते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट वापस प्रोवाइड करते हैं, उसको पसाजिंग भी बोलते हैं. वो कैसे किया जाता है? सो सेल्स को डिटैच किया जाता है अगेन यूजिंग एंजाइम्स, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, और उसको आप फ्रेश मीडिया में ट्रांसपोर्ट करते हो, फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर करते हो एक न्यू फ्लास्क के अंदर आप उसको ट्रांसफर करते हो. अब हर ट्रांसफर को आप पसाज बोलते हो. सो नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डूइंग इट, द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर पसाजिंग इट. सो 1 2 3 4 10 12, जितने भी टाइम्स आप उसको पसाज करना चाहो, जितने भी टाइम आपको लगता है कि इतने नंबर ऑफ जनरेशंस डिवाइड होने के बाद आई रिसर्च द पार्ट, तो उतने नंबर ऑफ जनरेशंस उसको ये पसाज करना पड़ता है. सो ईच ट्रांसफर इज कॉल्ड अ पसाज, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ पसाज नंबर इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड सेल हेल्थ फॉर एक्सपेरिमेंट्स. बिकॉज कितने सेल्स वायबिलिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन कितने नंबर ऑफ पसाज करने तक वो सेल्स लाइफ रहे, जिंदा रहे, लाइक दे वर लिविंग, राइट. तो वो उस पर डिपेंड करता है. जितने नंबर ऑफ पसाजेस तक सेल जनरेशन लाइव है, वो उतना हेल्दी सेल लाइन है और उतना ज़्यादा इट कैन बी यूज्ड टू मेक अ ड्रग और व्हाटएवर. सो दैट इज हाउ सबकल्चरिंग एंड पसाजिंग has an important role in cell culture. Now comes the cryopreservation part. Cryopreservation क्या होता है? So to preserve cells for long term use, जब लंबे टाइम तक के लिए आपको कोई सेल लाइन या सेल को प्रिजर्व करना होता है, तो क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक्स कम्स इन द पिक्चर. सेल्स को बहुत अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे, बहुत ही अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे फ्रोज किया जाता है. अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में सेल्स को फ्रोज किया जाता है, ताकि वो ग्रो करे लंबे टाइम तक. सो क्रायोप्रोटेक्टेंट्स के साथ, और क्रायोप्रोटेक्टेंट्स उसके अंदर डाले जाते हैं, क्रायोप्रोटेक्टेंट्स सच एज DMSO ऐड किया जाता है, जिससे कि जो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन ना हो, इसीलिए DMSO डाला जाता है. दैट कैन, बिकॉज आइस फॉर्मेशन होगा तो इट विल डैमेज द सेल्स, इसलिए क्रायोप्रोटेक्टेंट DMSO डाला जाता है ताकि आइस फॉर्मेशन ना हो इवन इन दैट लो टेम्परेचर. सो -196 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर स्टोर किया जाता है, दैट लंबे टाइम तक के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में. उसे हम बोलते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन. सो ये करने से रिसर्चर्स को सेल लाइन स्टोर कर पाते हैं वो इंडेफिनिटली, और उसको रिवाइव कर पाते हैं जब भी उनको चाहिए होता है, विदाउट लूजिंग देयर जेनेटिक और फंक्शनल प्रॉपर्टीज. So that is how cryopreservation is a very important technique. Again I am repeating, cryopreservation में आप -196 डिग्री पे सेल्स को स्टोर करते हो लिक्विड नाइट्रोजन में, एंड यू यूज द क्रायोप्रोटेक्टेंट DMSO बिकॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो, बिकॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तो इट विल डैमेज द सेल्स. सो यू यूज DMSO एज अ cryoprotectant in the cell line. Now what are the applications in biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी में सेल कल्चर्स की काउंटलेस एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में, जैसे कि आप वैक्सीन एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए आप सेल लाइंस को काम में लेते हो, रिसर्च पर्पस के लिए आप काम में लेते हो, कैंसर का रिसर्च है, स्टेम सेल्स का रिसर्च है, तो उसमें के लिए आपको सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए आपको सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, जीन थेरेपी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए सेल्स की. सी वैक्सीन्स के लिए सेल्स पे रिसर्च की जाती है पहले, बैक्टीरिया सेल्स पे या जो भी किसी भी टाइप ऑफ सेल लाइन पे पहले रिसर्च की जाती है, उस सेल्स को यूज करके फिर वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है.
तो वैक्सीन एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, ड्रग कितना टॉक्सिक है या नहीं ये पहले सेल्स पे टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ काम आता है। कैंसर और स्टेम सेल रिसर्च में सेल्स काम आते हैं, सेल कल्चर काम आता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है तो सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, सेल कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। जीन थेरेपी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए भी ज़रूरत होती है। So see, these are some of the most important applications: vaccine and antibody production, drug toxicity and screening tests, cancer and stem cell research, recombinant protein production, gene therapy and regenerative medicine. But please note all of these applications. These are very important applications. I'm repeating once again: vaccine and antibody production, drug testing and toxicity screening, cancer and stem cell research, recombinant protein production, gene therapy and regenerative medicine. Now, what are the challenges in cell culture? See, challenges ये हैं कि contamination. Contamination is one of the most important challenge which comes in cell culture. So see, bacteria can contaminate the culture, fungi can contaminate the culture, cross contamination भी हो जाता है कभी cell lines के बीच में, तो उसकी वजह से contamination is one important challenge. Then there are the other problems as well, जैसे कि genetic drift है, mutations है, reproducibility errors है over long time use. So genetic drift is कोई एक particular generation अगर रही ही नहीं, that particular generation, if there is a fault in the cell line, mutation अगर cell line में आ जाते हैं तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर हो जाता है, जितना हमने सोचा था उतना नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा, उतने जल्दी वो डिवाइड नहीं हो रहा. सो ऑल ऑफ दोज एरर्स आर चैलेंजेस. स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना, स्टेराइल इक्विपमेंट को यूज़ करना, एंड दैट टू दे हैव टू स्टेराइल, वो कभी कभी वो मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है. ये सारे challenges are very important to maintain strict lab protocols and proper training. ये सब challenges can be overcome if strict lab protocols and proper training is used. Okay. Now recent advances in conclusion. See, there are so many advances for cell culture. So recent advances such as 3D cell culture, organoid systems, lab on a chip technologies, ये सब एक ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हैं सेल कल्चर में विच इज़ पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट्स पॉसिबल, राइट. साइंटिस्ट जो हैं वो रियल ह्यूमन टिश्यूज़ को मिमिक कर पा रहे हैं, रिसर्च इम्प्रूव हो रही है, टेस्टिंग इम्प्रूव हो रही है, ड्रग डिस्कवरी इम्प्रूव हो रही है. So all of these factors are the recent advancements in the picture. And to conclude, cell culture techniques have transformed biotechnology, enabling advances in medicine, genetics, and pharmaceuticals. So yeah, that's about it. I hope this video helped you in some way, or you understood the topic more clearly. If you have any questions, please do let me know below in the comments section. If you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comments section. I'll be back with more such videos. We will meet in the next videos. Bye bye. Take care.